फनल और वेबसाइट में मेन फ़र्क क्या होता है? जी ज़रूर, थैंक यू। Guys, let's not go into the very subtle details because वो इतना important नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक फ़र्क पता चल जाए तो वो काफ़ी है, क्योंकि इट्स नॉट अ रिसर्च टॉपिक टू डिस्कस। तो फ़नल और वेबसाइट में मेन फ़र्क ये है कि एक वेबसाइट जो है वो एक बिज़नेस या किसी कंपनी का ओवरऑल व्यू दे रही होती है, जिसमें उसके हर एस्पेक्ट की डिटेल होती है, हर प्रोडक्ट की डिटेल होती है, उसके कंपनी के गोल्स और इवन उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनकी पॉलिसीज़, उनकी टर्म्स और उनकी सारी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वो फनल्स बना सकते हैं, वो भी उस वेबसाइट में इंक्लूड हो सकती हैं। So a website is a collection of everything that a business or a company is doing. इसी वजह से एक वेबसाइट के टॉप पर एक नेविगेशन मेन्यू होता है जिसमें आपको रास्ता दिखाया होता है कि यहाँ पर होम है, जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पर शो करवाई जाएंगी, उनकी सर्विसेज की अलहदा टैब होगी, उनके कॉन्टैक्ट पेज की अलहदा टैब होगी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं and so on. So everything will be separate. It's more like a branched system. It's more like a tree. So you can go to a website and you don't have a specific reason to go there. It's more like a general thing. तो आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जबकि फनल जो है it has only one purpose, a single purpose. It has to take you to the lead generation. आपको कोई बटन प्रेस करवाना है उन्होंने, या आपसे कोई फॉर्म फिल करवाना है, या कोई सिर्फ एक ख़ास इंफॉर्मेशन देनी है, एंड इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक श्योर यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट द वन थिंग इट्स ऑफरिंग। सो मेन फ़र्क यही है कि अ फनल इज़ मोर like a brochure, like a invitation that has just one thing, the main agenda, and it is designed to make sure that you only click the button they want you to click. Order form हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, सर्वे हो सकता है, और आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को लेकर के फनल्स, मुख्तलिफ किस्म की फनल्स से शुरू करेंगे। जी, फनल इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट that is designed to get more leads or do more sales than a website, and it is designed by through some sales strategy to make sure you're not distracted. ठीक है, जिस तरह हम मार्केटिंग में कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ ट्राई करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमारे नए सेल्स गोल्स को अचीव कर सकेगी, तो उसमें से एक स्ट्रैटेजी जो यूनिवर्सली बहुत कामयाब है वो ये है कि हम क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट अब नहीं शो करवाते unless that they are our customers and they want to learn more about what we're doing. We only show them what we need, what we want them to see. Mr. Abdullah. ध्यान से। नहीं, मुझे लगता नहीं है मुझे इस टाइम पे ये सवाल करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे जहन में है तो कर देता हूँ कि मेरे पास मैंने एक हार्ड कोड पे बिल्ड की है एक वेबसाइट, ठीक है, लेकिन मैं उसको GHL पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या इज दैट पॉसिबल कि हम ये कर सकते हैं? कोडेड वेबसाइट है। कौन सी कोडेड वेबसाइट? यस, बट आई वुडंट रेकमेंड दैट। सो क्योंकि हाई लेवल के बिल्डर के अंदर
कोड विजिट है रॉ कोड को इस्तेमाल करने के लिए, but if you paste the entire code into that widget, it may preview the page, but there is a chance that some of the functionalities you may lose some of those. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि the builder जो नए वेबसाइट और फनल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम नो कोड प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, जैसे कि हाई लेवल है या वेबफ्लो है या एलिमेंटर है, they are more like drag and drop features, drag and drop functionality. So they're not designed to import HTML, CSS and JavaScript as a bootstrap itself. I've tried that. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम हाई लेवल पर नहीं बना सकते. I used to get some codes and apply that into the funnel builder through code. It works, but if you do that for the entire page, it starts to cause problems. मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे अगर फ़नल्स के बारे में लेक्चर देना है तो मुझे बताए कि फ़नल्स की टाइप्स क्या होती हैं, और आपको भी पूछ लेना चाहिए गूगल से या चैट जीपीटी से, ताकि आपको पता चल जाए कि इतनी सारी अजीबोगरीब किस्म की फ़नल्स होती हैं, सबकी सब फ़नल्स कहलाती हैं. सो कभी आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे एक लीड मैग्नेट चाहिए, या कभी वो कहता है मुझे VSL चाहिए, कभी वो कहता है कि ओके सो आई वांट टू गेट अ सेल्स फनल, or they use the word the webinar funnel. So a lot of new people get confused over these terminologies कि यार ये क्या चीज़ है. मुझे तो अभी तक सिर्फ बताया था कि फ़नल होती है और फ़नल वेबसाइट से मुख्तलिफ होती है. सो अब इतने सारे उल्टे सीधे नाम आना शुरू हो गए हैं. सो मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ एग्जांपल्स इकट्ठी करके रख ली हैं ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह हो जाए. सो नाउ दैट वी नो दैट अ funnel is only funnel has only one purpose, and the purpose is to get one thing done. जो भी उस पेज को प्रीव्यू करे वो सिर्फ he or she can do only one thing, that is what this funnel wants you to do. So हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. लीड जनरेशन फनल. सो लीड जनरेशन फनल यूजुअली हैज़ अ फॉर्म. सो इट ऑफर्स यू समथिंग, but you cannot take that offer unless you fill the form. So as an example, let me show you a page. So उसके डिज़ाइन पर बाद में बात करेंगे, हम उसकी बेसिक्स को ले लें. So this is a lead generation funnel or a lead magnet. So what is it doing? कि on your face, very bold, very big, there is an offer, there is a claim, and you can get that offer by giving them their first name, last name, email address or phone, or any information that you really want from them to do the rest of the marketing. So you can send them SMS or emails or call them or so do the next thing of marketing. This will help you generate the list of contacts who are interested in this offer. So that's how a form works. So to sell anything, you need to have a list of people who are interested in this offer. So the list, it's really hard to make a list. You can Google people through some filters, but that's going to take a lot of time. So what you do is you go on a social media platform, you run your ad. You have a landing page, you get some leads through your lead magnet, and then you have thousands and thousands of contacts in your HighLevel account, and then you can use that contacts to run multiple workflows, reactivations, and all sorts of things. Okay, so the next type could be a sales funnel, webinar funnel. I have an example of a webinar funnel. I
created for the company I work at right now. So this is a webinar funnel. It's simple. There's nothing crazy. It's just introduction, people, and there is another lead magnet. So a webinar funnel is also working as a lead magnet, or it's asking you some information so they know the people who are interested in this event, so they can teach them about. So it's more like a brand awareness thing, a webinar, more like a seminar. So they introduce a lot of concepts that are hard to explain. So they do long sessions, and at the end of the day, the people that are interested in that offer, in that concept, they can reach out through different means, different mediums, and start using the service or product you're offering. So there's another example, more like a brand awareness thing, can be considered as a sales funnel. So at the top of that, you're selling something. It could be e-commerce, could be a physical product. You have a lot of, this is more like a website, but it's in between, because it can be used to showcase your brand and everything that you are offering. And it has a call to action, which is schedule a call, and will take you to book a call on a calendar. So the next option is a product funnel. So the best example I found is Starlink, because that's going to come to your country very soon. So this is Starlink. It's more like a funnel, although it's a website page. So what's happening is, on their website, they are using different pages as different funnels. So you can do there is a roam page that is selling a product that is useful for roaming. You can put it on your car. There is a residential product. So it's same kind of product but different functionality. There is one for business use. So these are different funnels, but they are all connected into a website. So now you know the difference, that the navigation is being used to serve a website kind of behavior, but each page is just taking to a single service that is selling you something specific. So product. Then the next thing that's going to come it's going to be used very commonly is a survey or quiz. So आपने देखा होगा अब तक, I don't know इस cover हो चुका है आपकी trainings में या नहीं, लेकिन we have a survey and a quiz builder, just like a form builder, but you can get more information in an interactive way. So you can ask different questions from the people who are coming on your funnel. They can answer those questions, and based on those answers, you can qualify them as people who you want to sell, or disqualify them based on the answers they provide. So कभी-कभी होता है ना कि let's say you're selling solar panels, but you don't want to sell solar panels to someone who is not trustworthy. So you will ask them kind of questions like, what is the range of your income, or where do you live, or what is your bank statement, or have you been क्या आप पर कोई फ्रॉड का केस तो नहीं है, या आपकी गवर्नमेंट जॉब है, या आपका कोई बिजनेस है, या आप कुछ भी नहीं करते. Those questions are qualifiers. They're not there to demean anyone. For your benefit, those qualifiers can help you sell to the people
that will return um, that will pay you without pause. जब भी आपने क्वालिफाई करना हो कुछ लोगों को, या कह लें कि जब भी आपने डिसक्वालीफाई करना हो, when there is a need more than you can sell, so you can use a survey or a quiz to sell to the best people that you want to sell. Okay, so there is one more. So there is one called VSL, video sales letter. It's also a funnel, but it's more like so it's just catchy background to make you stay on the page. That's why we use different design elements all the time. The purpose to make the web page more interactive, more attractive, is just to make your clients stay longer on your page or be inspired by that, so that they are more likely to sign up for what you're offering. So VSL में होता है कि so you have a service or a product that is not very easy to present through images or text, so you make a video of that. Or maybe it's a journey, maybe it's some concept that can only be delivered through speech. So they make a 2-minute, 3-minute video to convince you why this is important, why this is the best thing you can have, and after watching that video, you can click to sign up for that. और जब हमने बात की interactive catchy pages की, so I found an example which is very interesting, and there are very smart people out there who are exploring coding, etc. So I think they should try to replicate that. Okay, so this is not really important, but we can say this is cool. So what's happening is in the background, if you click, there is a ripple effect. It's like we're in the water. It's not doing anything. It's not even a good page. Wise, but it's gonna make people be like, wow, what is this? I wanna buy whatever this guy is saying. Like, now you just forget why you're here and you are interested in this page. So I haven't figured it out yet, but it's interesting. If anyone needs that link to try to steal the idea. Okay, so there's a lot of things that we can do using the funnel builder, and there is a lot of things that we cannot do. I always try to apply new things into the limited options of the funnel builder that we have, and I really appreciate people who try to go beyond what the mainstream designer think is possible within this builder. So thank you. Okay, so for the new people who are just learning about HighLevel, so I'm creating a funnel and creating a page, a blank page. आपको मालूम होगा कि हम जब भी funnel builder में कोई page बनाना चाहें, जब कोई funnel बनाना चाहें, तो we can clone a funnel or a website from existing funnels, but we are going to use a blank page to understand the fundamentals. So
जब भी हम एक नया पेज बनाते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So there is a bunch of options at the top that is representing the page layers and pop-up. It also shows all the pages that you have under this funnel. You can also add widgets and external codes in JavaScript etc. In the tracking codes. So उसकी भी एक example दिखा देता हूँ. There is a so I pasted that into the tracking code. बहुत से businesses में accessibility चाहिए होती है, accessibility feature. So people with impairments, people who have poor eyesight or have maybe dyslexia, stuff like that. So there is a widget that I've added in the tracking code that can change the font size or can use text to speech, so if they can't see. Marketing webinar. Invitation. You are invited to attend an exclusive webinar organized open accessibility. So, and it can also do magnifier. And the last one is high contrast. Just crazy. So this is not something built into this builder, but we can use those kind of codes from external sources and add to our web page for more functionality. So ये इसलिए use होते हैं. Then we have the custom CSS, which we are going to use a lot tomorrow. उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी है जिसको हम सेट कर सकते हैं. जैसे ही हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें हम हेडलाइन और कंटेंट फॉन्ट सेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट कलर और लिंक कलर के सेट कर सकते हैं. आगे आ जाते हैं background. So if you want to put something in the entire background of this landing page, you can paste the URL here or upload from the media library, and you can also make the default background color anything other than white. Okay, the next one is pop-up. So I'm gonna skip that because this pop-up will take a lot of time. So there's another one for Mr. Abdullah, which is going to use that feature a lot. So जब भी हम कोई external code किसी web page पर डालते हैं, for example, okay, so I'm gonna skip some of the steps. So normally custom HTML और JavaScript वाला box जिसमें हम external codes apply कर सकते हैं, इनको प्रीव्यू करने के लिए ये इस्तेमाल होता है. So it will look like this, but if there is a code inside and you want to preview that within the builder, you can click this. Okay, there is a new feature called cookie consent, which is something everyone hates. So cookie, what do cookies do? They ask your consent and get your personal information to use them for marketing, or sometimes they sell your personal information to third parties. So this is very powerful when used carefully, but this is also annoying. Okay, so I'm gonna start over. So हमारे लेफ्ट कॉर्नर में है एलिमेंट्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन. Well, even before that, if I click on the sections, the first thing we need to do is take a piece of this page and add a section. So there are 4 elements of a page. There are sections, rows, columns, and elements. So
सेक्शंस, रोज और कॉलम्स डिसाइड करती हैं कि आपने पेज की लेआउट कैसे सेट करनी है, और उसके अंदर फिर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं. सो you can set the size of this section by going into styles. Oh my god. So recently they've changed the settings for the funnel builder one more time, so I'm gonna find it hard to find those things where they were supposed to be. So we can adjust the width of the section from here. ये आया भाई, ये परसों चेंज हुआ है सब कुछ. Yes, so this is gonna hurt me a lot because पिछले तकरीबन 1 साल से हम इस बिल्डर को बड़े आसानी से यूज़ कर रहे थे, और अचानक से जो है चीज़ें जो हैं जनरल और एडवांस, so I don't see advanced, so I'm like okay. इसके मेरे ख्याल स्टाइल्स में आप नीचे जाओगे तो वो नीचे एडवांस है. so मुझे बार-बार टॉगल करना पड़ेगा, इधर है या इधर है. So this is funny. Okay guys, the builder will continue to change, so don't expect that you got it like as a complete. हाँ, हो सकता है अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो तो फनल बिल्डर चेंज हो चुका हो. So अगर आप मेरी 3 साल पहले एक वीडियो है जिसमें मैंने एक वेबसाइट बनाई है, it's called Zero to Hero something, और if you watch that video now you will like ये कौन सा सॉफ्टवेयर, ये कौन सा बिल्डर है. So it's so different. सारी चीज़ें दूसरी तरफ हैं. They're on the left side now. It's on the right side, and all the features. So so it's gonna keep changing. They've recently decided that the Webflow website builder is the standard. Let me try to show that for a minute. वेबफ्लो फनल बिल्डर को स्टैंडर्ड अगर ये लेके चल रहे हैं तो जिन लोगों को इलस्ट्रेटर आता है वो उनके तो वारे न्यारे हो गए, क्योंकि वेबफ्लो जो है वो एक ऑनलाइन इलस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है, एडोबी इलस्ट्रेटर. और जिनको नहीं आता वो थोड़े फंस जाएंगे. So oh my god, maybe मैं क्योंकि लॉगिन नहीं कर पाया, so oh yes, so look at that. So there is a million options and it's so beautiful as well. आप right side पे देखें, it's crazy. It's like 5 years ahead of HighLevel right now. But they're following that. There's a lot of real CSS properties, how they're represented. Even I'm feeling very very scared right now. So there's pretty much everything that can be added to the builder, and they're so condensed that it's scary. It's scary for even those who have been using different drag and drop website builders. So इनका गोल ये है कि they are trying to make to add all those features in the styles and functionality into this builder. So they'll keep adding stuff. So you will have to continue to learn. आप labs में जाके हर दूसरे तीसरे महीने बाद देख सकते हैं कि there will be something new. Just like the rest of the stuff, they keep adding, because HighLevel is being more successful than a lot of marketing and SaaS marketing and it's called HighLevel. It's one of a kind software, so it has a lot of potential, and it's going to stay for a while, even in the times of AI. यार ये बिल्डर डार्क मोड पे जाता है HighLevel का? नहीं, अभी तक नहीं. ये चेंज कर दें इनको, खुदा का वास्ता है. सर हम कस्टम से कर सकते हैं वैसे, अगर एजेंसी से हमें मिल जाए तो हम ट्राई कर सकते हैं. ओए मैं तुम्हें परमानेंटली म्यूट कर दूंगा. So
हाई लेवल की जो एजेंसी कस्टमाइजेशन है वहाँ पर आप कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, but you will need to have a lot of understanding of the backend. जो भी इनका जो भी ये इयन भाई, ये अब्दुल्ला भाई जो हैं ये फहद मंसूर भाई के छोटे भाई, लेकिन अब समझ आ जाएगी अब। आ गई सर। मुझे वैसे तस्वीर से आइडिया हो रहा था कि it's probably ठीक है ठीक है। Okay, so sections are in green, rows are in blue, and columns in light purple. और ये लेआउट के लिए है और फिर उसके अंदर आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं। So इसको confusion से बचने के लिए मैं एक पेज डिसाइड कर लेता हूँ। Probably this one is nice. Probably. So let's quickly try to replicate this page so we can practically go through this. Okay. So what's happening is there is a section at the top. This is one entire section जिसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है और उस कॉलम के अंदर एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये लोगो लगा। That's how the layout works. Then there is another section which is very wide and there is a bunch of elements. So but the layout is still the same. One row, obviously there is one column in the row, so one column, and the elements are stacked vertically. So there is a button, there is a H1 heading, there is a subheading and a form. उसके बाद यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, फीचर समथिंग, इमेज फीचर। so हम इसको दो कॉलम से भी बना सकते हैं बट हम इमेज फीचर भी यूज कर सकते हैं। So and then there is another section again, single column, logo, some description, and then there is some buttons or links. So ये simple elements हैं। तो break down कर लिया, अब हम इनको replicate करने की कोशिश करेंगे। So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो paddings हैं बहुत थोड़ी। So when we look into the builder, the section has default paddings as 20 pixels top and bottom. So that's very annoying because that's gonna stay there, and we want very small values. I'm gonna use 2. Never use 0 because if you use 0 for any of those elements, you cannot be able to click on that because वो दूसरी चीज़ों के पीछे छुप जाएगी. So keep a little bit of padding, so you can still click that. लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि I cannot easily find this section. Oops. मुझे so आज पता चला। So if you use exactly 0, then it's a problem. Then you'll have to go to layers every time and then go to section and find that and do that, and you're like, okay. So uska easy hack ये है कि just if you want to use very low paddings, use something bigger than 0, like even 2 is better than 1, so or maybe 3 even. So yeah. So I'm using one column. The next problem is that, okay, so there's a lot of elements. I haven't introduced all the elements. There's heading, subheading, paragraph. ये आपने SEO की basis पर इनको use करना है कि do not use a lot of headings. The best thing is to use one heading per page. H1 tag एक ही होना चाहिए पूरे पेज में. For best SEO, you can have as many subheading as you want. H2. Use at least one H2. That's what Google requires, and then you can use a lot of paragraphs.
ठीक है, आप सब हेडिंग्स को भी पैराग्राफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम. देयर इज 2 form elements, button or the form itself, and there are blog elements, blog post, navigation. It's a blog navigation, different than the website navigation, and then social share, there's social media buttons. Then we have some media elements, image slider, video, image. I'm gonna use image for logo, and there's just more of that. There's logo showcase, which is new. I haven't seen that. How it works is gonna be interesting. I'll see. Photo gallery, FAQs, raw code editor, custom widgets के लिए, custom features के लिए, surveys, that is also a widget, calendars, maps, SVGs के बारे में मेरे से बेहतर हुसैन आपको बता देगा. रिव्यूज़, अगर आपका जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल कनेक्टेड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नंबर काउंटर, we used to have some kind of number counter, but it says it's new, so it's maybe improved. Okay, what is that? Oh, okay. So आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर जैसे ही आप उस वेबसाइट को लोड करते हैं, it shows the number of employees we have, the number of sales we have, the amount of money we've raised. So it shows like in a countdown state, like it starts from 0 and goes to a certain value. I wish I had an example on hand, but so they've just introduced that. हम इससे पहले इसको भी कोड के ज़रिए अप्लाई करते थे. So that's an addition. I'm happy about it. Then we have funnels के लिए होता है like sense of rush डालने के लिए countdown कि this is a limited time offer, और हम उसमें मिनट टाइमर डाल सकते हैं for some advanced functionality, जिससे होता है कि जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है तो वो जो ऑफ़र है वो गायब हो जाती है. इस तरह के हम फीचर्स फंक्शंस बना सकते हैं. Then we have something to do with things to do with sales, order forms. So that's pretty much all we have right now. We also have pre-built sections, so अगर आप चाहें तो अगर आप को वेबसाइट डिज़ाइन में बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो you can drag and drop entire elements, so it can save a lot of time. But इयन भाई कमेंट्स में पूछ रहे हैं जी कि पैडिंग और मार्जिन में फ़र्क क्या है? Yes, thank you. That's a good question. So let me make this, give it a color. Okay, so गंदा सा कलर दो. Let's remove that. अच्छा. Yeah, it's not very good either. So. अच्छा. खट्टा पीला रंग दे दो. बल्कि मैं आंखें खराब हो जाएं देख के. Okay, so I'm gonna do one more thing. Allow row to take the entire width. So now the row has the same width as the section, and I'm gonna change the color as well. Let's give it a khatta color. ठीक है. Okay, so I'm going to get to this. So अभी मैंने क्या किया कि मैंने सेक्शन को सेलेक्ट किया है, मैं उसके स्टाइल्स में क्या, और मैं आपको दिखाता हूँ कि पैडिंग से क्या होता है. सो पैडिंग से होता है कि इफ़ यू गिव इट अ पैडिंग ऑफ लेट्स से 10 अगेन, सो टॉप एंड बॉटम, सो इट्स द डिस्टेंस बिटवीन from inside between the section and the row. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सेक्शन को मार्जिन बढ़ाऊं तो ये बाहर वाली स्पेस बढ़ाना शुरू कर देगा, which is that. Let's make the background. Let's change the background as well so you can see the difference. Okay, so आप देख सकते हैं कि पैडिंग जो है वो इनर
बॉक्स की जो इनर डिस्टेंसेस हैं, इनर स्पेसेस हैं, उनको डील करता है। जैसा कि इस डायग्राम में शो भी हो रहा है कि सो द पैडिंग इज गोइंग टू डील विद द इनर spaces and the margin is going to deal with the outer spaces। ठीक है, सो क्योंकि इस सेक्शन के इनर साइड पर रो है ब्लू वाली, तो उससे उसका जो सेपरेशन है वो बढ़ेगी। Give it a 10 on all four sides and you can see that it's happening on the inner side। or if I do the margin, let's say 20 margin on all sides, so now it's doing it on the outside। देखिए पेज के बाहर वाली साइड से, यानी सेक्शन की बाहर की साइड से स्पेसेस बढ़ रही हैं। so that is the main difference। is it very nicely explained, thank you। Let's get back to replicating this page। so to save time, I'm just gonna copy the image address। the best practice is to download this and upload into the media library, but the shortcut is to copy the link and just paste it into general में है image URL। you can paste it there to get the logo। oh, it's an SVG, okay। and you can also adjust the width and height, so you can have complete control by just using one of those two features for not for symmetry। दोनों पैरामीटर्स को ना छेड़ें तो बेहतर होगा। so मैं दोबारा पैडिंग्स की तरफ आऊँ तो आप देख सकते हैं कि I'm gonna use very small paddings instead of 10 as default। it doesn't matter for the left and right। so same is for the column, reducing the paddings। and now I'm gonna make everything black। मैं सेक्शन को ही ब्लैक कर देता हूँ और बाकी सब कुछ को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, so it doesn't just okay। so we were able to replicate the top, the header। कोई कहता है कि इसको मज़ीद छोटा कर लें, so that's fine। 50 okay। so let's move on। so we have another section and I realized that I gave it a margin and there shouldn't be a margin for the first section, so let's make it back to 0। okay, so on the next section we have a nice white background and a button and a heading, a subheading and a form। so I'm gonna quickly do that। one column, a button, so a headline, a subheadline and a form। I've added everything in one just okay, I don't know, I'm gonna use any form। ठीक है, so हम इसकी स्टाइलिंग को बाद में सेट कर लेते हैं। so how does a button look like? a button has this red background, thick font। you can also click inspect and see what font they're using। if it's not a Google font, it's a problem, but we can copy that। it's Gilroy, I don't know if it's a Google font। yeah, so I'm just not gonna worry about it then। okay, so if I click on the button
लेफ़्ट साइड पर सारी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जनरल हैं, स्टाइल है और एनिमेशन है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस बटन से रिलेटेड हैं, नथिंग एल्स। So every time I click on an element, the right side shows all the properties associated with that specific element. And we also have we also have in the styles at the bottom. We also have this class ID for this specific element that we can use to add more CSS that we cannot do through the limited style features. Okay, so we want to, in general, let's start from all the things we can change. We have this text, we copied that, we pasted in the text. We can also add a subtext, but we don't have that. We can change the font. I'm gonna use custom font and try to see how bold I can go with Lato. So that works for me. This is white. So the background is red, and if you also want to know exactly what red it is, if you do click inspect element and click on this button, it's gonna give you the hex code for the background, which is F10041, and you can add that color to your palette. Background, add a color, add a hex code F10041. Now we have the exact red that we want. Okay, so the last thing is that we have a border that is curved, and then there is a shadow at the bottom. Curved border. Let's go to styles. We have a border. Maybe the paddings is a little less than 15. Eyeballing that. Border. Full border. 1 pixel. Black border. Border radius is somewhere between 15 and 20. I'm not sure. It looks like it's 20, but you can also confirm that. It's does it say? Border radius is 15 pixel. If you click on an element in the console, it usually shows all the CSS properties that you can copy or preview. So the border is 1 pixel solid black, and the border radius is 15 pixels. So I'm gonna use that. Oh, padding kitni thi? 1.8 rem. So rem is another unit that is different from pixels. So you can probably use rem as well. 1.8. So it doesn't look like that. झूठ बोल रहा है ये रैम के बारे में। Oh, it's 0.8 by 1.8. So okay, sorry. अच्छा It's 1.8 on the left and right, and 0.8 top and bottom. So आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने ये पता लगाना है कि ये what is rem, why do we use rem instead of pixels, like why is it, how can it be better than that, the other one? एक तो डीप स्लीप होती है, एक रेम स्लीप होती है। नहीं वो वाली नहीं है। अच्छा तो फनल पे रहने दे प्लीज। मैं भूल सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, रेम की खासियत ये है कि वो डिवाइस के हिसाब से जो है उसकी पैडिंग को एडजस्ट कर देता है। सो प्रोबेबली इफ वी गो टू ओके, बट जो मैंने देखा है पिक्सल जो है वो एक एब्सोल्यूट यूनिट है, वो
नहीं देखता डिवाइस क्या है, बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या है, जी जितना पिक्सल लगाया है उतना ही वो हर जगह पे रखेगा। रैम जो है वो एक रूट एम उसका पूरा वर्ड है, वो एक रिलेटिव यूनिट है, और वो जो है उसके अपने HTML आसपास वाले HTML के हिसाब से जो है उसके हिसाब से वो उसको स्पेसिंग्स उसकी रखता है। तो अगर आपने डायनामिक स्पेसिंग देनी है मार्जिन पैडिंग की, तो आप पिक्सल की जगह रैम यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो मोबाइल वगैरह में टैब में डेस्कटॉप में अपने मार्जिन पैडिंग रिलेटिवली सेम रखे, एज अपोज के मोबाइल व्यू में इतना बड़ा फट के आ जाए और डेस्कटॉप पे इतना सा लग रहा हो। सो ये उस वक्त यूज़फुल था जब हमारे पास मोबाइल को अलहदा से हाँ। मोबाइल पैडिंग्स को अलहदा से एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। सो आई डोंट नो इफ़ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट नाउ। सो बट ये बताना था कि देर इज़ like 1 2 3 4 5 6 units of paddings and margins, which is crazy. आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि 6 में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा कहाँ पर यूज़ करना सूटेबल है। सो it's very interesting. Okay, so जो मैंने डिज़ाइन क्लास में पढ़ा था उसमें उन्होंने हमें परसेंटेज का बताया था, ये परसेंटेज वुड बी दी मोस्ट डायनामिक वैल्यू टू यूज़, वो भी है इसमें मेरे ख्याल से। जी जी जी। So anyways, let's go back to the fix the paddings, change the background color. Okay, so the last thing is the shadow, ये वाला shadow. So we have a bottom shadow somewhere like 3-4 pixels, so that can be done by at the very bottom we have box shadow and text shadow. We don't want text shadow, so let's click box shadow. It's gonna do some default values. I'm gonna use 0 and maybe 4. No blur because we don't want blur. We want to spread it to, we don't want it to spread. Maybe 1 pixel, some eyeballing, and it's gonna be full black. So that's more like it. Oh, I don't like spread. Okay, so there you go. So आप shadow के ज़रिए वो feature दे सकते हैं। If you want to so अब मुझे थोड़ी सी जो है ना CSS वाली जो है तकलीफ हो रही है। So I'm gonna go a little bit ahead of myself and show these guys कि हम CSS में इस बटन की क्लास ID को use कर सकते हैं for some hover animations, stuff like that. But before you do that, make sure you remove the hash and change it to .c, and you can use colon hover, और properties जो हैं वो braces के दरमियान में लगती हैं। I'm gonna use a background that changes to something like an orange, and also give it a transition so it does it slowly, 400 millisecond. This is almost half a second. Semicolon. Okay, so just to give you an idea, I gave it a थोड़ा change कर देते हैं। Okay, so look at that. So we can use CSS properties to change the colors on hover. What's happening? It's no crazy stuff going on. I just tell the system to apply on just this element on this page. When the cursor is hovered over it, that the background of this element should change to this color, and the time it will take should be about 400 milliseconds.
and that's exactly what's happening. So when I hover over this element, the transition slowly happens. ये तो जादू है. That's how CSS works. Things that you cannot do within the builder yet. There is also some new features coming in, which is the entrance or hover animations. There is just limited hover animations, so it can elevate. So now we have two properties. One is doing internally and one externally. We can also do entrance animation, that is the up animation. So or maybe left animation. So क्या होगा कि जब भी ये पेज प्रीव्यू किया जाएगा, so the button will come from left side every time you preview that. That's called the entrance animation. That's new on this builder. And the fun part is that we can also adjust the animation now, which is also new, that we can change the scale, we can change the duration, which is like how long it will take to do that, and how much time it will take to start the animation. And there's ease in out, there's some advanced properties for the animation. So everything ease in और out जो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, जो हमने डिज़ाइन क्लास में पढ़ा था अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, ईज़ इन होता है कि वो झटके से आएगा और आराम से आके रुकेगा. ठीक है, वो आखिरी वाला जो एक थोड़ा सा सेकंड है वहाँ पे वो ईजी हो जाएगा. ईज़ आउट जो है वो मतलब निकलते हुए आराम से निकलेगा और आके झटके से रुक जाएगा. ईज़ इन एंड आउट बोथ में ये है कि वो आराम से निकलना शुरू होगा, झटके से आगे आएगा और फिर आराम से आके रुक जाएगा. Thank you. Exactly. So I'm quickly adding the rest of the stuff, which is 53, something like that. So let's make it 50. Okay, so जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है बनिस्बत हमारे बिल्डर में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. उसकी एक वजह यह है कि हमारा फॉन्ट डिफरेंट है, बट वी कैन एडजस्ट दैट बाय गोइंग प्रॉब्ली इनटू स्टाइल्स. आई एम नॉट श्योर कहाँ होगा. तो लाइन हाइट, सो वो अब जनरल में आ गया. So you can adjust the line heights maybe 1, and now it's ये line height जो है ये decide करती है कि जो lines हैं उनके दरमियान distance कितना होगा. So usually default is 1.3. You can use 1, 1.2, 0.9 EM, which is a different unit. So that's that. यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट दे दूँ जी प्लीज. जो हमने टाइपोग्राफी में पढ़ा था लाइन हाइट्स के बारे में, तो ये था कि अगर आपका फॉन्ट बड़ा है और बोल्ड है तो आपने लाइन हाइट जो है वो 20 to 30% इंक्रीज़ करनी है ताकि वो रीडेबल हो. ठीक है, अगर आपका फॉन्ट थिन और स्मॉल है, जिस तरह आप देख लें हेडलाइन के नीचे जो है सब हेडलाइन आपने लगाई है वो एक थिन फॉन्ट है और स्मॉल साइज़ है, तो इसकी आप लाइन हाइट और उसको वो बोलते हैं मेरे ख्याल कर्निंग बोलते हैं, जो स्पेसेस इन बिटवीन लेटर्स होती है, तो उसको भी आपने कम करना है 20% देन द स्टैंडर्ड. उससे क्या होगा कि छोटे लेटर्स रीडेबल होंगे लाइन हाइट वगैरह कम करने से, और बड़े और बोल्ड लेटर्स रीडेबल ज़्यादा होंगे लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ाने से 20 to 30%. तो ये बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे टाइपोग्राफी के ना. तो अब फॉर एग्जांपल ये जो आपने हेडिंग लगाई है, इसको अगर आप 1.3 करेंगे लाइन हाइट में और इसकी कर्निंग वगैरह भी आप 1.3 कर देंगे तो इट वुड बी अ बिट ईजियर ऑन द आइज. ठीक है, लेकिन ये तो पता नहीं अब किस हिसाब से 1.3 कर रहा है, 30% होता है बेसिकली. तो what's happening is that sometimes we have to eyeball. जब हम काफ़ी सारे वेब पेजेस को देख लेते हैं तो हमारी एक सेंस डेवलप हो जाती है कि दिस लुक्स गुड एंड दिस डज नॉट लुक गुड, और the spaces should more than that or less than that.
तो हम टेक्स्ट बुक रूल्स से थोड़ा सा डिविएट कर लेते हैं। हाँ, एज अ डिज़ाइनर अगर आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया फनल बनाने के लिए, तो यू बेसिकली बीन हायर्ड एज अ डिज़ाइनर। तो आपने करना क्या है कि आपकी जो ईएन भाई ने आई बॉलिंग वाली बताई है ना, कि आपको देखने में वो सही लगना चाहिए पहले, ठीक है, कि आप उसको देखें और उसको कहें कि नहीं यार इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, आपको चुभ ना रही हो आपकी आंखों को, काइंड ऑफ, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। तो आपको जब वो स्वीट स्पॉट मिल जाए तो वहाँ पे आप रुक जाएं, और उसके बाद फिर आपने क्लाइंट से फीडबैक लेना है कि उसको कैसे लगती है। So there's another thing I'm doing is stealing the background. You can get the background from the inspect as well. ये मैं सोच रहा था, ये बैकग्राउंड कैसे निकालेंगे। So अगर आप जो भी नए लोग हैं, नॉर्मली होता है कि अगर हम किसी सेक्शन पे ये कर्सर पे क्लिक करके किसी सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यूजुअली इट प्रोवाइड्स द लिंक समवेयर इन हियर, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम सोर्सेज में जाते हैं और सोर्सेज में वो फोल्डर्स होते हैं, जैसे हमारी मीडिया लाइब्रेरी, सो इट्स एक्सेसिंग देयर मीडिया लाइब्रेरी। सो आई विल ट्राई टू फाइंड द वेबसाइट फाइल्स फोल्डर, और वहाँ पर मुझे वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो उनकी मीडिया लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सो आई फाउंड दिस, आई कैन कॉपी दिस इमेज URL एंड paste it, and that's how easily I was able to do that. So now we can decide whether the setting of this. So okay, yeah. The last thing is that is a little blurred, fade हुआ है थोड़ा सा, blur नहीं। So I'm gonna use white color for the background, but because this is on top of that, the image, so I can use the image opacity property, give it a light fade, maybe a half fade, and that's exactly pretty much close to. So maybe tomorrow we can also cover on customizing the form, or we can learn the advanced elements or replicating a website that has more features. कि आप किसी भी लैंडिंग पेज के एलिमेंट्स को पहचानें कि वो आपके बिल्डर में के एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स से मैच करते हैं। So once you recognize that element, you can use that and start customizing. It will not be exactly like that when you apply that. जैसे कि अगर मैं ये image feature use करूँ at the bottom, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पे use हुआ है, this is circular, there is a red border, heading and subheading has a specific size. So क्या होगा कि वो उसको customize करना पड़ेगा आपको। So image radius will be circle, हेडलाइन और सब हेडलाइन की जो फॉन्ट साइज है उनको सेट करना होगा, उनकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं, इसको फिर आप टेक्स्ट और इमेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ना लगे कि ये सही अब मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 कॉलम्स लेके एक कॉलम में हेडिंग और सब हेडिंग अप्लाई कर दें और दूसरे कॉलम में इमेज अप्लाई कर दें, जिसको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस ज़्यादा हैं बनिस्बत इमेज फीचर के। सो दैट्स हाउ यू कैन try different approaches to get to what you want. So हम क्यों मशवरा देते हैं कि आपको फनल्स बनाने सीखने के लिए फनल्स रेप्लिकेट करना चाहिए, इसलिए कि उनमें डिज़ाइन सेंस आपको खुद ब खुद आती जाती है। अगर आप स्क्रैच से खुद एक लैंडिंग पेज बनाना चाहेंगे तो वो एस्थेटिकली इतना वियर्ड होगा कि you will start like feel bad about yourself or think that you cannot do it. You will choose the
you will choose the wrong colors, you will not know how the paddings look aesthetic, or so it will take a lot of time and still not look good. So find a web page that you think is nice and try to replicate that. That will help you. उसका एक और फायदा ये होगा कि वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो लोगोज हैं, जो कलर्स हैं, जो फॉन्ट फैमिलीज हैं, वो भी आपको उस वेबसाइट से रिसोर्स के तौर पर मिल जाएंगे, और आपका जो प्रैक्टिस है वो आसान हो जाएगी. सो ट्राई दैट. मैं कह रहा था आज का एक होमवर्क तो हम ये दे सकते हैं ना कि वेबफ्लो पे जाएं, एक फ्री अकाउंट बनाएं, वहाँ से कोई छोटी मोटी फनल या फनल पेज उठाएं और अपने अकाउंट में उसको एक दफ़ा रेप्लिकेट सेम टू सेम वैसा बना के देखें. So you don't have to create an account, just Google Webflow templates. ठीक है, there is all the templates are available. आप कोई भी चीज़ उठा लें, if you click any of those pages that you like, आप इसको preview in browser और preview in Webflow कर सकते हो. So you don't have to do preview in Webflow. You preview in browser and just okay. So home page. Okay, so this looks very advanced, very interesting, but you don't have to make it exactly like that. But आप इन चीज़ों को यहाँ से उठा सकते हैं. आप देख सकते हैं कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए. हीरो सेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, and so on. You can learn a lot of stuff. फाद भाई ने जो है वो चैट में क्लिक फनल्स के टेम्पलेट्स का भी लिंक दिया. वो कह रहे हैं कि इस पे भी अच्छे टेम्पलेट्स पड़े हैं प्रैक्टिस करने के लिए. हाँ, आई थिंक आपको पहले क्लिक फनल्स की टेम्पलेट्स देखनी चाहिए, बिकॉज वो इस वजह से उनको रेप्लिकेट करना ज़्यादा वो बेसिक है. वो क्या कहते हैं, जो प्रॉपर जो बेसिक फनल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो उसके ऊपर बने हुए हैं. ये थोड़े एडवांस हैं, थोड़े मुश्किल हो जाएंगे. तो वो जरा एक दफा वो खोल के इनको दिखा दें सबको, तो I'm opening a page from ClickFunnels. This is more like a funnel. जो पिछली दिखाई थी that was more like a website. So this funnel is it has a nice hero section with big headline, और आप देख सकते हैं कि it's looks like a product funnel, and it's taking us to so it doesn't matter. So it should take us to a form or an order form. So funnels mostly इस तरह की होती हैं. So अगर आप इस तरह की किसी पेज को रेप्लिकेट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. थैंक यू फाद, that really helps. या भाई फाद भाई ने एक और उसका दिया है, एक्सटेंशन का लिंक दिया है क्रोम की, जो पेज की सारी इमेजेस डाउनलोड करके दे देता है. तो वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा, बजाय कि अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी सोर्सेज में भी अगर इमेज नहीं मिल रही तो आप ये एक्सटेंशन यूज़ करके सारी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. जी 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 जी, ये एक अच्छा ऑप्शन है. मैं क्योंकि वो उस दौर का हूँ जिस दौर में हमें जो है I also prefer old school. हाँ, old school. So जानने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हमारा काम आसान कर सकती हैं. सो गाइस, एक और चीज़ मुझे याद आई कि अक्सर आपको इमेजेस मिलेंगे, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, या अगर आपको ग्रेडियंट्स बनाने होंगे, तो इस तरह की बहुत सारी सिमिलर वेबसाइट्स मौजूद हैं गूगल पर जो आपको फ्री ये काम कर देती हैं. और एक और शॉर्ट नोट इस इमेजेस को लेके ये था कि यू शुड प्रेफर टू यूज़ JPG और WebP images to upload into the media library, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा easily सर्वर पर
वो स्पेस कम होती है और प्रॉब्ली वेब पी तो PNG वाली फंक्शनैलिटी भी रखती है। सो वेब पी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फिर आपको उनको PNGs में सेव करना होगा। अदरवाइज़ आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट देख सकते हैं जो आपकी PNGs को और JPGs को WebP में कन्वर्ट कर दे। Soon there's gonna be an update on HighLevel that's gonna auto convert all your media to WebP, ताकि आपका जो है लोड स्पीड पेज की जो है वो ऑप्टिमाइज रह सके। ओके भैया। In the meanwhile, I'm sharing the link of the funnel we're going to replicate today. So there you go, everyone, ताकि आपके पास रेफरेंस के तौर पर मौजूद हो। सर ये फनल हम आज रेप्लिकेट कर रहे हैं। इयन भाई ने बड़ी सोच समझ के बड़ा ढूंढ के ये फनल निकाली है। इस फनल को आप मेमोराइज कर लें, इस पूरी फनल को याद कर लें, ऐसे इसको बैठ के पढ़ें, रटे लगाएं इस फनल को। हाँ, so the reason behind it के मैं कोशिश तो कर रहा था कि कोई ऐसी फनल मिल जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन के इश्यूज कवर हो जाएं, लेकिन मुझे कोई ऐसी एक फनल नहीं मिली जिसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हों। आप यूं कर सकते हैं कि अगर फनल बनाते बनाते आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट आए जो नॉर्मली तंग करता है लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ करें नहीं आया, तो वो आप मेंशन कर दें। हाँ, हम ऐसे करेंगे कि उसमें कुछ एक दो एडवांस इफ़ेक्ट्स डालने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर अ कपल लिंक्स जो कि आपके डिज़ाइन के लिए, उसकी कस्टमाइजेशन के लिए काम आ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू ऐड दोज इफ़ेक्ट्स टू द करंट फनल एज वेल, अगर टाइम बच गया एंड में। So the goal is for the quality of this video is to recreate this website to the end, कि हम हेडर से फुटर तक तमाम सेक्शंस को कवर कर जाएं ताकि वो एक comprehensive सेशन के तौर पर सेव हो जाए हमारे पास। इसके बाद हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा शरारतें कर सकेंगे। वेलकम एवरीवन, आज हम ये वेबसाइट जो कि आप सबके पास आ चुकी है इसको रेप्लिकेट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वेबसाइट को इस तरीके से इस फनल को इस तरीके से बनाऊँ कि उसका मोबाइल व्यू एडिट करने में हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। आमतौर पर ये होता है कि कुछ नए जो ट्रेनीज़ होते हैं जब वो बिल्डर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो दे डू व्हाटएवर दे थिंक इज़ द बेस्ट वे, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब वो उसके मोबाइल व्यू देखते हैं तो वो उसकी शक्ल इतनी बुरी होती है कि उनको डबल टाइम लग जाता है उसको सेट करने में। So here we go. Okay, before I do that, I want to show you something. Sometime it works, sometime it doesn't. अगर आपके पास किसी कोई क्लिक फनल आए आपके किसी क्लाइंट के पास और आपके पास उसकी एक्सेस हो और आप उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करें तो लॉट ऑफ टाइम इट वर्क्स, इट्स इन बीटा। और होता यह है कि अगर डोमेन कनेक्ट ना हो आपके पास जो क्लिक फनल्स 2.0 का प्रीव्यू लिंक हो, जो कि एडमिन्स के पास जो लिंक होता है वो वाला लिंक, शेयर लिंक प्रॉब्ली, सो it imports the entire funnel and you don't have to replicate that. But sometimes the paddings and margins get distorted, sometimes it doesn't import. So मैंने सोचा चलो एक ट्राई करके देख लूँ कि क्या हम एक इस प्रीव्यू लिंक को इंपोर्ट भी कर सकते हैं।
जहाँ पे इसमें कस्टम सीएसएस वगैरह अगर लगी हुई है क्लिक फनल के अंदर तो वो इंपोर्ट नहीं होके आती है। वालेकुम सलाम जी फाद भाई। तो अस्सलाम वालेकुम जैसा कि भाई। आप देख सकते हैं कि so we can skip 90% of the work if it is a click funnel, ठीक है, but that's not our goal today, ठीक है। so हमारा मकसद है फनल बिल्डर को यूज़ करने में इतना कंफर्टेबल हो जाना कि हम कहें कि नो I'll just build it from scratch. But obviously there's a lot of times the clients that are using ClickFunnels is reducing every day. So but it's a feature, अगर आप जिसको नहीं मालूम था तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये कवर हो जाए बात। Okay, so without wasting any more time, let's start from the top. So I will not toggle between the two pages very often, only except for reference for the recording. लेकिन मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर ये प्रीव्यू खुला हुआ है, so I will just most of the time I'll be taking the reference from the other screen. So आपको बिल्डर ही मोस्टली नज़र आता रहेगा। so अगर किसी को महसूस हो कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ या वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कोई सेक्शन या कोई रो क्यों बना रहा हूँ, तो they can always preview the link I've shared on their end. Thank you. So like always, we start from the header for the desktop view. Add an element, full width section, one column, actually two columns. I'm gonna use allow row to take entire width and manually adjusting the width somewhere like 80 to 85%, but it's not necessary. For saving time, I'll be using links rather than uploading those images into the media. So एक तरफ हमारे पास लोगो आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास एक बटन आ गया। We'll quickly adjust that. Go to styles, left aligned, reduce the paddings. Same for the section. That's interesting. क्या इन्होंने रो की डिफॉल्ट पैडिंग 10 कर दी है? I'll confirm that today. If that happened, it's a good thing. Okay, right aligned. I'm going to check the typography. Right serif. It's not a Google font. And I'm gonna use Meriwether. And also for the color, hex code is TCB962.
The font weight is going to be a little more than that. Here we are. The button has the curved border. So we'll go to styles, borders, full border, 1 pixel, maybe transparent because we don't want a border color. And usually the full curve is somewhere between 25 or 50. So I'm going to use 50. And there is an arrow at the end. जो कि आपके पास जनरल सेटिंग्स के एंड में है आइकन, और 2 ऑप्शंस हैं, लीडिंग आइकन एंड ट्रेलिंग आइकन. सो आई एम गोना यूज ट्रेलिंग आइकन. इट्स गोना गो एट द एंड ऑफ दिस टेक्स्ट arrow, and this is the arrow. ओके, सो अगर हम एरो और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो हमें CSS यूज़ करनी पड़ेगी, बट दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई लिव विद दैट. Increase the padding left and right to 30. That looks better. And let's go to the next section. Alright, so we have a 1 column, H1, then we have a subheading, and then we can use the same button. So आपको मालूम होना चाहिए कि हम existing elements को clone करके मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें उनकी ज़रूरत है. सेंटर अलाइन. So the content font, this is 80 pixels, so I'm gonna go somewhere between 70 to 80. So the H1 is moving extra spaces. So the H1 is building wooden houses and cozy cottages, जिसमें जो building wooden तक का जो हिस्सा है वो yellow है, and now we have this feature that we can change the color of specific parts without giving a separate class. So that is done easily. I'm gonna give it some paddings. कोशिश करें कि पैडिंग्स को सिमेट्रिक रखा करें ताकि मोबाइल व्यू में वो वियर्ड ना लगे. Usually I use 18 to 20 pixels for the subheading for the desktop view, and 14 to 16 for the mobile view. But बाकी आपको जहाँ पर suitable लगे आप उसको सेट कर सकते हैं. ओके, सो दूसरे सेक्शन में सिर्फ यही चीज़ें थी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी स्पेसेस हैं. So I can increase the paddings top and bottom either by increasing the padding of section, or I can do something else which I prefer, कि मैं 2 खाली रोज जो हैं वो उसके ऊपर नीचे डाल देता हूँ. So क्या फ़ायदा होता है कि when we go to the mobile view, we can hide these from mobile without affecting the design. क्योंकि अगर मैं paddings डाल दूंगा, और this is also from the time when we had the limitation to have same paddings for desktop and mobile. हालांकि अब इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब हम
मोबाइल वेरिएंट के लिए भी पैडिंग्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई यूज्ड टू डू दैट ट्रिक, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी नाउ. Okay, so we have a background. It's a dark background. On my other screen, I'm just gonna get that background from the same landing page and use the image address and just paste it. So you didn't see that part, but that wasn't very crazy. So क्या होता है पैरालेक्स में जो बैकग्राउंड है वो पीछे फिक्स होता है, जबकि हम उसके ऊपर जो सेक्शंस हैं उनको मूव करवा सकते हैं. लेकिन इस केस में we will use full center, which is what's happening, and we can change the color from black to white. Okay, एक छोटी सी बात है जो मेरे जहन में आई, जिस तरह हुसैन ने कहा था कि वो जो छोटी जो निटी ग्रिटीज होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनमें से एक ये है कि जैसे कि मैंने कल बताया था कि डू नॉट यूज़ ज़ीरो फॉर द पैडिंग्स इफ़ यू वांट टू रिड्यूस इट. इसी तरह एक डिज़ाइनर्स एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि डू नॉट यूज़ फुल ब्लैक और फुल वाइट बिकॉज इट हर्ट्स योर आइज. सो especially when the contrast is huge. So instead, rather than using 000 for black, use 111. So it's also black, but you can't know the difference. And use rather than using FFF for pure white, use EEE, which is also very close to white, but it's not exactly white. So, but it doesn't strain the eyes. So that's that subtle detail. आप काइंडली एक कस्टम कलर ऐड करके दिखा सकते हैं कि FFF और 0 कहाँ पे ऐड करना है. जैसे कि आप देख लेंगे जो 000 है that is full black, but if I add a color which is 111, which also represents the 6 ones, it's the same thing. So this is black, but it's not as painful as the 000. Or you can also use 222. जेट ब्लैक नहीं है या फिर स्पेस ब्लैक नहीं है. हाँ जी. सो इसी तरीके से जैसे कि आप जानते हैं कि FFF जो होता है वो प्योर वाइट होता है, बट इफ़ आई यूज़ EE which is a little below the white on the spectrum, तो आपको एक ऐसा वाइट मिलेगा. You cannot know the difference, you cannot tell the difference on the screen. See, पहली नज़र में यही लगेगा कि प्योर वाइट है, बट it's more comfortable in the dark backgrounds. So that's one of those details that make your web page look better than others. So far so good. वैसे तो हमारा बिल्डर अब ऑटो सेव की भी कैपेसिटी रखता है, बट अभी ऑटो सेव ऑफ हुआ हुआ है. So because it just makes things slower. बहुत अजाब था भाई ऑटो सेव. हाँ, तो I'm happy that they did that. At the same time, जब भी आप कोई पेज सेव करते हैं साइड में SEO मेटा डेटा खुलता रहता है बार बार. सो एक बार आपको चाहिए कि इसको भी फिल कर दिया करें, क्योंकि जो पेज के टॉप पर आता है, जैसे यहाँ पे मोगल FRM लिखा है या विडक्राफ्ट लिखा है, सो इट शोज राइट हियर. लेट्स से and there should be a description if you want to make this page go live.
and it should not be more than 155 characters as per Google for better SEO ranking. You can add your author, and the social image is gonna show when you जब भी आप ये लिंक किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसमें जो इमेज शो होता है वो यहाँ से आता है. सो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पेज प्रीव्यू बट इट्स गुड. कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि ये छोटा सा जो फैब आइकन होता है टैब के ऊपर ये कहाँ पर होता है. तो आपको बताने के लिए अगर आप किसी भी फनल का लैंडिंग पेज बना रहे हैं, आप उसकी सेटिंग्स में जाएं तो आप यहाँ पर फैब आइकन यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं and that will start to show on your page. If you don't do that, it will look like this. It will show this so it's blank. Now it's showing black, but blank. It shows like this planet-like symbol, default symbol. Depending on the browser, but if you want something to be there so you can have something on your media storage. So I'm just gonna use this mail link and paste it into the favicon URL behind the page. Hit save. And then your page will have something. So make sure it's a PNG or it has no background, so it doesn't look so weird. Better than nothing. Okay, moving on to the next section. We have, दिखा देता हूँ reference के तौर पर. We have this section, black with 6 columns, an image and a subheading. New section, full width. I'm gonna use 6 columns. Okay, now here's the trick. I'm gonna add an image. It doesn't matter if I choose a 6 column or a 2 column. I'm just gonna, because they all look the same, so I'm gonna work on one and just clone the others. I'm going to copy the image address into this and also copy the text for the subheading. Place it right there. Okay, we have 20 white color. The entire background is black, so I'm using 111. Okay, and now I can clone this. So I'm cloning the columns and deleting the empty ones. Oops. So all I have to do is replace those images with other images and replace the text. So saving some work. If you want to know what exactly I'm doing, right click, copy image address. This is not standard procedure, but you should download and upload.
जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा स्पेसेस आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन जस्ट remove that later. Oops. Okay, so there we go. If you think there is more spaces at the top and bottom, let's increase the padding to 40 for both top and bottom. If you want to see how it's looking on the mobile view, you will notice that we can adjust these two things as well. Okay, let's go. तीसरे सेक्शन में हमारे पास एक सब हेडिंग है, एक और सब हेडिंग है. I'm not calling it a heading, but you can call it H3, H2, H3, H3, and an image. So 2 columns essentially. So let's go. Two columns. We're going to put on this, change the color. Left aligned 16 maybe. So that's more like it. And we have an image. और अच्छा, सो आप ये कर सकते हैं कि जो इमेजेस हैं, अगर आप एक सीरियस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उन इमेजेस को कैनवा पर डिज़ाइन कर लें. आप 3 इमेजेस को कैनवा पर एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, इस तरह के इफ़ेक्ट्स डाल के फीचर्स बना सकते हैं. सो जो आपका ग्राफिक डिज़ाइन का काम है वो आप किसी ग्राफिक डिज़ाइन टूल पर कर लें और फिर उस
उन चीज़ों को आप अपने पास पहले से सेव करके रखें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, दैट विल हेल्प। क्योंकि मैंने बाद में जो है पूरा पेज जो है वो बग़ैर रेगुलर साइज में बनाया, तो हम just gonna make it go back to normal, not use the wide sections. Okay, so far so good. Moving on to the next section. अच्छा, आप एक नोटिस करेंगे एक चीज़ जो कि डिज़ाइनर्स को मालूम होती है और शायद उनको आदत पड़ गई होती है. So what will happen is that there's gonna be a section that is light, probably white. There's gonna be a dark section, and then there's gonna be a light section, and then there's gonna be so alternate between light and dark section that is more appealing to the eye. And so it looks more attractive. Okay, moving on to the next section, we have okay, so I'm gonna save more time by cloning the entire section, the hero section, जो कि उसके नीचे आ जाएगा, और उसको फिर मैं इसको मूव कर दूंगा इन एरोस के जरिए नीचे. That will help me do this thing faster even. Then we don't have a button, but 4 columns, each having an image and some description. So the products are, so again we can use we can use these. Let's create them again. Okay, an image and 2 subheadings. So when you use regular bold using Control B, it's gonna go from 400 to something like 700. But if you want to give it something between, you will have to use font weight, which has more control. Okay. Once again, you can edit this image on Canva because हमें इस तरह का yellow border बनाने के लिए CSS use करनी पड़ेगी. So you can, if you don't like to do that, you can save time by creating this circle on Canva. Okay, now we have one more thing, which is there is a black box around it, which is probably the column. So I'm gonna give this column some extra paddings and some margins too, ताकि वो columns एक दूसरे से वाज़ेह तौर पर अलग-अलग हो जाएं. You will see that in a minute.
and then I'm gonna clone that. I should have cloned that after one more thing, which is the changing the color. Now I'll have to do it 4 times. But anyways. So what's happening is that the margin, कल आप लोगों ने पूछा था कि मार्जिन और पैडिंग कहाँ पर कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं. सो यू सी कि अगर मैं मार्जिन को कम करूँ तो इन 2 कॉलम्स के दरमियान का डिस्टेंस कम होता है, जबकि मैं अगर पैडिंग को कम या ज़्यादा करूँ तो अंदर से जो कॉलम और इमेज के दरमियान का फासला है वो बढ़ रहा है. So I need to so I have this control through paddings and margins. So if I think that the padding is too much, I can just delete the ones that have more paddings and then clone this. Okay, I'm gonna skip the pricing. And there's a big padding at the bottom, and also the background is this wood. Planks. So I'll change the background. Okay, so I don't have to use any opacity because the images are already doing good, doing okay. Maybe a little more padding for this. Okay, so the next section. What's next? So we have a strip with 3 columns. Okay, now we have a new color which we can pick from. We can pick colors from color pickers as well, but I'm old school, so I'm just gonna inspect 544438. So they're using a variation of brown. A line to the left. Seeking expert advice. Not italic. Increase the size.
अच्छा, एक और चीज़ है जो अभी तक सामने नहीं आई थी कि आप कॉलम्स के साइज़ को ये जो दरमियान वाला डॉट है उससे पकड़ के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। Okay, so make the background yellow. Now we have a phone number and a phone icon. So there's two ways we can recreate that. One of which is that I add an image on top of that. Just the size, and there's a lot of column options that we haven't covered. So there's column layout options. The first one is vertical, and if I use horizontal, so the columns become horizontally aligned. This is rarely used, and this doesn't always give the best result. So it's used for specific certain reasons. And this example is not the best. It can be used for social media icons more than this. So I realize that this is not working for me. So what I'm gonna do is use the icon picker from within the system and look for call and use something similar because I can't find the exact one, and use that instead. And I'm gonna make the column have the same layout. And the last one is the button, which I can once again clone on top. Okay. Oh, this may not be very special for you, but for me, they made the standard padding for the row to be 10 instead of 15. Right. Let's move on to the next section. Now the next section is a little more interesting. There is a subheading and an H2 on top, so that's one column, and then there is another section with 3 columns, and the middle one has a 3D image. And there's a bunch of websites that you can steal 3D images because you're not using 3D images for 3D purposes. So you can use those from a bunch of websites. Maybe you shouldn't talk about that at the moment, but I'll try at the end of the session. Okay. So 1 column, 3 column. New section, 1 column and another row with 3 columns. So the first one is, I'll use something.
Okay, you were able to save a lot of time. Now we have the part where we, okay. So we can use the image feature function, and so when you click on the image feature, there's a lot of option on that. So the first one is change the image on the left side, and the yellow streamlined workflow, I place with that. And then we have a subheading. That's in Spanish. And you can see we have more options at the bottom. So the typography for heading and for subheading, different font sizes. Color options for heading and subheadings are separate. And you can also add an icon, which is not needed. Okay, once you do that, you can clone this. So in order to save time, I'm just gonna keep the copy the same. And then I can clone this entire column. We can move columns from these arrows left to right. That's another thing you should know. Okay, in the middle of this these columns, we have this 3D image, for which I'm just gonna do the same thing, just paste the PNG. Okay, so now that we talked about it, you can Google 3D objects. And there's a bunch of websites. My favorite one is CG Trader. This is a website that is used by 3D artists to buy low poly 3D objects. I'm gonna look for a building, let's say. So you can see that rather than using a regular image, you can get a 3D model of an image, something like that. You can use a car, and that will look way cooler than regular images available on
on different websites where you get your resources from. So you can so this is more like a trick that you can use these images on your website to look more modern, more flashy. So this is one of the examples. Okay. You want to say something? यहाँ पे आप वो पूरा 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे या फिर उस 3D ऑब्जेक्ट के प्रीव्यूज में से एक इमेज सेलेक्ट करके उसका लिंक जी ऑब्वियसली we can't place a 3D ऑब्जेक्ट. मैं ये कह रहा था कि so like this you can preview that image and you can even get a PNG out of that. Okay. तो कभी कभी होता है कि हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना होता है जो कि हमें उसकी एक अच्छी पिक्चर नहीं मिल रही होती, और अगर उसकी एक 3D लुक मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. जैसा कि so I did something for in one of the websites I built. Look at this robot. This is a 3D. So I got it from CG Trader. Made a PNG out of that, and this looks cool. Yep. So you cannot get this image for free anywhere on the website. You know that, right? So, but you can, and look at that, this hand. So this looks crazy. Like, how can you get something like that? So these are the things that you can add to your website. Be creative about it, and yeah, you can have a lot of interesting results. Maybe I have one more example. Oh no, I don't. Anyways, this was for those who be like, I want to add something like that on my web page. हाँ, जो कल बात हो रही थी 3D ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली पेज पर लाना कि वो कर्सर पर या स्क्रॉल पर मूव होते हों. That's very advanced. It's not very easy to apply. It requires a lot of. So this is like basic stuff. Like anyone can do it. So that's why I'm mentioning that. अगर ये फिग्मा को स्टैंडर्ड बना के फनल बिल्डर को चेंज करते हैं तो फिग्मा के अंदर ऑप्शन है 3D ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने का वेबसाइट पे which interact with the cursor. Oh yes, हाँ जी, और वेबफ्लो में भी है. So they use keyframes, scroll based and cursor based keyframes. So अगर तो वो इफेक्ट उन्होंने वो फीचर्स डाल दिए, you'll have the option to have a starting point and an ending point like an animation. So कि कहाँ से कहाँ तक कर्सर जाए तो कौन सी चीज़ें किस तरीके से मूव हो या टर्न हो. So but we'll see how long it will take for them to add that to our builder. It sounds very far-fetched right now, but let's see. So moving on to the next section, and we're getting very close. Okay, I think it's still a long page, so we'll have to stop somewhere. तो जो features repeat हो रहे होंगे हम उनको skip कर देंगे. After that, I'll probably show you how we can do this parallax effect, and then we'll go into some advanced design effects. So इसको पूरा नहीं कर सकेंगे.
So the reason I'm still doing the mundane thing over and over, so that you start to feel comfortable watching that over and over. So you start to feel comfortable. Okay, this is not something crazy. It's the same thing. You will have to just be patient and repeat stuff over and over. हाँ, यकीनन जो नए यूज़र्स हैं उनको जब उन्होंने खुद प्रैक्टिस की होगी तो उनको महसूस हुआ होगा कि हमें तो वो सेटिंग्स के ऑप्शंस को ढूंढना पड़ रहा होता है. सो हाउ डू यू फाइंड इट सो इजीली? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जैसे आपको मसल मेमोरी में आ जाता है जब आप कुछ अर्सा एक टूल यूज़ करना शुरू करते हैं. So that's going to take some time, but other than that, it's very simple. हाँ, तो जब भी रिपीटिंग एलिमेंट्स हो तो आपने एक एलिमेंट पर फोकस करना है और उसके बाद फिर उस पूरे को क्लोन करना शुरू कर दिया करें. That will save a lot of your time. Once again, I'm going to skip the copy. So, here is a button. ओके, सो बटन एक्शंस पर हमने बात नहीं की, बट क्योंकि अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बटन्स आर एसेंशियल फॉर फनल एक्शन. सो क्या है कि जनरल सेटिंग्स में आपके पास लिंक टू बटन एक्शन मौजूद है. सो it has a lot of problem and recently added the download file as well. So we can link it to a website to open in a new page or the same page. We can download a file. So अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी में कुछ अपलोड किया हुआ है तो उसको लिंक कर सकते हैं. So it will start to download on the browser. This is something I was waiting for a long time. Hide and show elements. This is something advanced. So if you have an offer that you want to show only after pressing a specific button, so you can hide and show certain elements using button triggers. Okay, so we also have scroll to element. कि अगर हम button पे click करें and it scrolls to the page, like if there is a button to see show the type of wood we use. And I say this button should do scroll to element, and I choose this
section and hit save. So it's gonna do exactly that on the preview. It may not smooth scroll, but it will do a little bit. So try that. Type a foot. It takes me exactly to this page. The backend needs to do a little bit more of a CSS, so it scrolls softly and smoothly to this section. But at least they have this this abrupt move to a specific section feature. Okay, there's more effects. There's more actions. It can go to a funnel step. So if you have multiple steps, you can make it go to a specific page or step. It can go to the next step if you're making a linear funnel. So the next step is probably the order form or the calendar. Okay, so there is another option called upsell or downsell that is normally used after the order form page. We haven't covered that yet, so it's not very important right now. We can link buttons to start a call that works on mobile. So अगर आपका कोई ऐसा जैसे कि look at that. So if this is a button, so I can link it to call this number. So as soon as you click on this on your mobile phone, it will start. It will take you to the dial pad. We can also make the buttons open the mailer, or this goes to the SMS box. This goes to the mailer, so it will take you to the Gmail, and it can also do a membership course. So you can directly link your membership courses that are built inside HighLevel. So we can link buttons to membership as well. This is the least commonly used. Anyway, so the button actions, you should look into those. I'm ending this by adding just one more section. Or maybe I should work on the footer, because footers are important. So I'm gonna skip everything to the footer. So let's try 3 columns. This time I'm gonna increase the row width. Okay, so usually you say something, company name, all rights reserved. So in the footer, you can also use custom values, and this is something we haven't covered either. But Harold will explain that part in the future trainings. So we can use a lot of custom values, and you should know that we can call custom values very easily. So normally, if I say and you don't know about you wanna put your company name. So if you have a custom value for the company name, you can click braces, and it's gonna show a list of all the custom values that you can use. So you can use account name. That's gonna show you. That's gonna put the company name. You can also put another custom value, which is the right now year, which is something I use, so I don't have to change the year every time the next year starts. It's going to show 2025,
There's a bunch of custom values that you can use if you have something specific. So and once you get used to building funnels, the next step is to build funnels for companies or agencies who, when you use a lot of custom values, even for the text, for the copy, for the logos, and pretty much everything. So anytime you share the funnel with someone, it automatically updates itself with their personal information, company information, their branding, their colors, and so on. So you can make it a dynamic page, but maybe that's too early to talk about at the moment. I'm gonna finish by adding social media icons. And we can skip some, we can delete some, we can add more. There's a whole bunch of social media websites that you can add depending on what you want to show. There isn't a lot of customizations available for the social media icons, so you can use you can also create custom elements for those. But if you want to save time, this is available. You can only show icons or text with white color. And there's a bunch of options for customizations available, but there isn't enough. It isn't enough that I like it, but it works. At least it works. So you can paste your Facebook pages, Facebook groups, anything you want there, your Insta handle, stuff like that, very easily. Okay, so that's pretty much sums up. Okay, now I want to talk about two websites that I love, that I found on the internet when I was really exploring, taking my design skills to the next level. So one of that is called glassmorphism, and there is a glassmorphic generator. So you don't have to, learn a lot of CSS. But essentially what it's doing is it gives you the ability to make a glass-like effect with some blur options. And so you can adjust the transparency. You can adjust the blur of the background. You can also change the color. So you can get something else. Sorry. ये लास्ट वीक मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, ये मुझे पहले पता होता। Okay. मैंने एक बंदे से पूरा कोड लिखवाया है इसका। Okay, so you can copy the CSS and I'm gonna apply somewhere on this page. So let's say I do that on this column, on these the black backgrounds, because they're not looking the best. Or even more so, let's make this section look cool. So make a border, so we know it's something is happening. Give it a yellow, curve it a little bit, and now I'm gonna go to my CSS box and paste the code. It's not linked to anything yet, but the section, so I'm gonna apply this to this section. So you can see at the bottom the CSS selector for, not the section, sorry, the row, which is in blue. You copy that,
and paste it behind with braces. So everything else is these are the properties. I can talk about these properties as well. So one of that is the background of this row, the border radius. We don't need that because we've adjusted that already. Box shadow, so there's gonna be a shadow, just very light. Now the important part is backdrop filter. So that's an advanced CSS property. So we're blurring it to 3.8 pixels. Then there is another, the same property with WebKit, backdrop filter. So WebKit is used when it's to give it a browser compatibility. So a lot of time this property is not gonna work in a lot of browsers. So we also use the same property with WebKit, so it can cover the browsers not compatible with. And then we have the last one is the border, which we adjusted, but okay, we can skip that or not. Okay, let's skip that. So now we have a glossy look with a yellow border. We can even skip the yellow border if it's too much. Okay, wait. Probably nothing. Okay, so how about that? So looks cool. And the next thing is that can be used somewhere on. Okay, so the next property I'm gonna use here. That's another one, just as cool, called new morphism. So new morphism, if I give you the example, that so someone came up with the idea to give shadows and depth in a way that it looks 3D. So just shadows with some radius in here, and we have an example of a website built using the entire website built using this neomorphic effect. I hope I find it. Oh yeah, this one. So look at the buttons. If you hover over it, it looks like it's like going into the page and out of the page. The word for it is embossed. Embossed? Embossed, yes. Okay, cool. So on Google I found it with the name new morphism, I guess. नहीं, ये है न्यू मॉर्फिज्म. ये स्पेसिफिक स्टाइल न्यू मॉर्फिज्म है जो पेज के अंदर जा रहा होता है बटन, उस प्रॉपर्टी को embossed बोलते हैं. Oh, I see. So this is embossed, and okay. So they've given a lot of examples on different elements, and all look cool. Everything looks cool. So the most interesting part is the buttons and social media icons. I love those. Where is that? Look at that! How cool is that? It's like it's crazy. Look at those social media icons. They're amazing. So you can use that property. On this website, neomorphism.io. So you can adjust the effect, the distance of the shadow, the intensity, and then we have shapes. So it's some concave and convex shapes. So let's say I want to use that. But I want to use that on a black background. Can it work? Maybe it doesn't. So it works on light backgrounds only.
बेसिकली वो शेडो और हाइलाइट्स के थ्रू इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो ब्लैक पे शेडो और हाईलाइट गुम हो जाती है। Okay, so I'm gonna try with a button. Make it gray. Give it a little bit of border. And radius. A little bit of text shadow. Okay, maybe not. It's not very visible. Sorry. Okay, so let's do that. So once you just the distance and intensity, you can copy the CSS. I'm gonna skip some of the properties for border and so on. We don't need border radius. So it's background, it's a linear gradient, it's multiple gradients at different points. There is a shadow, there's a complex shadow, and then I'm gonna link it to this button by going to styles at the bottom, copy the CSS selector, go back, link it to that, close. Okay, that's it. Okay, so yesterday I talked about not using the exact CSS selector for the button, and the reason for that is simple, that this class ID, this selector is for the entire box of the button, but we want to only apply it to the certain part of the button that is under consideration. So for that we'll have to change this hash symbol to .c. I talked about it yesterday, but I didn't tell why, so here's the reason. So it only covers the part of the button that is under consideration, so it doesn't take the entire box for the button. So now this is a neomorphic button, which it's not looking the best for some reason. I'm gonna try applying important, maybe. Oh yeah, so the shadow was not working. So that's neomorphism. Maybe if we make the background a bit darker, darker than the shadow.
Actually, the same. It should be the same. Okay. Yeah, and we can also do that on hover. We can change the effect on hover. So I'm gonna copy this and go back and paste and use the same class ID. With hover. And there you go. So now on hover it's also doing something cool. Let's see. हवर का डिफरेंस कैसे इसको आपने बताया है? उसकी कौन सी क्लास है? So ये है बटन, बटन की सेलेक्टर और ये भी बटन का सेलेक्टर, बट उसके आगे है कॉलन और हवर. That means this part is gonna work on hover and this part is gonna work on ठीक है. ओके हो गया. See, so I want to have a transition, but maybe it will not. It doesn't work on. I've seen it doesn't work on gradients. But let's see if it does. Don't think it's working. प्रीव्यू करके देखें. Okay, so two of those things. The class morphism is cool, and we have a neomorphic button with hover effect. It's very subtle, but you can play with it. Comes up with all sorts of colors, but make sure when you apply that, the background should be the same color. For it to reveal itself best. All right, so that's that. I think I've covered most of it. So सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको फनल बिल्डर को यूज़ करने का तभी होगा जब आप 2-3 लैंडिंग पेजेस मुकम्मल हेडर से फुटर तक बनाएंगे. एक चीज़ रह गई है, मैं इसको कवर कर जाऊँ जो कि मैं भूल गया. मुझे ज़रूरी था आज कवर करना. एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ये कि ये सवाल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सवाल इम्पोर्टेंट था कि एक फनल और एक वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है. वो ये है कि लोग पूछते हैं कि हम जब किसी सेक्शन को सेव करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि क्या इसको एक टेम्पलेट के तौर पर सेव करना है या ग्लोबल के तौर पर सेव करना है या यूनिवर्सल के लिए सेव करना है और इसमें फ़र्क क्या है. So usually we save headers and footers as global. उसका मतलब ये होता है कि अगर और जैसे ही आप इसको ग्लोबल करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा. ग्रीन से ये ब्लूइश पर्पल हो जाएगा. So क्या होगा कि now as long as you use this header in the next page, let's say we have another page, or maybe you can even try to do that in front of you. So let's say there is another page and I want to add the saved section. So it's going to ask me, so do you have it saved on the templates or global or universal? So universal is the new. I'll explain that. So as long as I do that, ये यहाँ पर वैसे का वैसे आ गया. अब क्या होगा कि जो भी चेंजेस मैं किसी भी पेज पर करूँगा एक ग्लोबल सेक्शन में वो तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाएंगे. सो कीप इट कंसिस्टेंट. तो क्योंकि हेडर और फुटर वेबसाइट्स में कंसिस्टेंट होते हैं और नॉर्मली हमें फनल्स में हेडर और फुटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट वेबसाइट्स में हेडर और फुटर कंसिस्टेंट रखने के लिए उनको ग्लोबल के तौर पर सेव करना चाहिए.
बट द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप entire pages, entire sections, you can save them and import them into the next pages. So you save them as templates ताकि वो कॉपी तो हो जाएं लेकिन आप उनको मॉडिफाई भी कर सकें और उनका पीछे वाले ओरिजिनल पेज से कोई लिंक ना रहे. So I hope you got the difference. Okay, so the last thing is universal. So universal ये था कि अगर आप एक सेक्शन को ग्लोबल या टेम्पलेट के तौर पर सेव कर रहे थे तो भी आप उनको किसी और फनल या वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. सो रिसेंटली देव एडेड यूनिवर्सल सेक्शंस और टेम्पलेट्स. तो अब आप अगर आप उनको यूनिवर्सल के तौर पर सेव कर लें सो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ दिस फनल. यानी मैं इस फनल, इस सेक्शन को अगर मैं यूनिवर्सल सेक्शन के तौर पर सेव करूँ तो मैं किसी और फनल में भी इसको कॉपी कर, इंपोर्ट कर सकता हूँ. सो दैट्स समथिंग आई वांटेड टू कवर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर वो आप कह रहे थे ना कि वेबसाइट और में नेविगेशन का ऑप्शन होता है, तो मैंने अपनी फनल्स बनाई है तो उसमें भी तो नेविगेशन का ऑप्शन होता है जो कि मैंने यूज़ किया है. हाँ, जो फनल बिल्डर है ना हमारा, वो एक जनरल बिल्डिंग टूल्स दे रहा है. उस बिल्डर के अंदर नेविगेशन मेन्यू का ये मतलब नहीं है कि उसको हम फनल में यूज़ करें. इट हैज़ एवरी widget or element that can be used on a web page. Not every, because it's still in the process of evolution, but funnels are not supposed to have a navigation menu because it will take your lead to some other page that should not happen. But my funnel also working on navigation. हाँ, तो फनल पे नेविगेशन काम करेगी, लग भी सकती है, हो भी सकता है, ठीक है. अब फंक्शनल फर्क नहीं है फनल और वेबसाइट में, थ्योरेटिकल फर्क है कि एक फनल का मकसद होता है कि आप एक पेज से शुरू करें और उसको पैसे भरने तक ले जाएं या कहीं ऑप्ट इन करने तक ले जाएं सीधा सीधा, ठीक है. आपने अगर उसके ऊपर एक नेविगेशन बार लगा दिया है तो वो फनल का मकसद फौत हो गया, थ्योरेटिकल मकसद फनल का फौत हो गया. अब वो किसी और भी पेज पे जाके अपना चुल पंगे करना शुरू कर देंगे. तो वो फनल और वेबसाइट में एक थ्योरेटिकल फ़र्क होता है. जो बिल्डर है फनल और वेबसाइट का, वो बिल्डर दोनों सेम है, ठीक है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ. होने को सब कुछ फनल में हो सकता है, होने को सब कुछ वेबसाइट सेक्शन में हो सकता है. बेसिकली मैं हावर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा. Hover is a state of an element. Yes. तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स की और भी स्टेट्स हैं, लाइक एक्टिव हो गया, जी जी, विजिटेड हो गया, लिंक हो गया. लोग समझते हैं कि सिर्फ ये एंकर के लिए हैं, मतलब लिंक के लिए हैं, बट ये सब एलिमेंट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है. तो ओके, सो आई कैन आंसर पार्शली. I can answer your question partially with one example. Okay. ठीक है. So what I'm gonna do is okay. So मैं forms के अंदर हूँ. हाँ. और ID थी, वो उठाई है. I'm not sure if it's gonna work, but I'm playing with it. यहाँ से उठाई है. अच्छा. So what I'm trying to do is कि ये हावर पर बॉर्डर ग्रीन हो जाए और जी बी Okay, let's see.
गया फिर। Okay, so it's not working. सर आपने कॉलम यूज किया हुआ है सॉलिड से। कॉलम यूज किया हुआ है? अच्छा इन भाई एक चीज़ और है, मैं ऐड कर दूं कि अब्दुल्ला इटसेल्फ जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर है, तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है रिलेटेड, वो ये बस ये वो हो रहा है कि हाई लेवल में ये चीज़ें चल जाएंगी या नहीं चल जाएंगी, तो उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना आपने, वो उसको वो बता देना हाँ चलेगी या नहीं चलेगी, बाकी हफ्ता रहेगा। Oh yes, that is true. That is true. सर वन पिक्सल सॉलिड के आगे जो कॉलम लगा वो उसकी मैं बता रहा हूँ। Oh, okay, okay, okay. Yes, you're right. हो सकता है वो सही हो, so it was my mistake. सेव क्यों नहीं हो रहा? Okay, so okay, I'm happy. So when I'm hovering over this field, now it's turning green. देख सकते हैं? So I'm gonna do one more thing. I'm just gonna copy this field, paste this ID, paste it again, and this time I'm gonna use active. On active, I'm gonna make it go blue. RGB. Okay, so green on hover and blue on active, but it remains active as long as I keep the mouse, keep the click pressed. But at least it's working. So yes, it works. But I had to go through something. हाँ सर मेरे फनल से ना दो क्वेश्चन है। एक तो फनल का जो डिज़ाइन होगा वो कस्टमर देता है, और जैसे वेबसाइट में होम पेज होता है उसके अंदर कुछ सेक्शन होते हैं अबाउट अस, सर्विसेज, ETC वगैरह, तो इस तरीके से फनल में कौन से ऐसे सेक्शन होते हैं जो ग्लोबली होते हैं, मतलब इन्हें बनाना ज़रूरी है? नहीं, फनल में नॉर्मली पेजेस जो हैं वो नेविगेशन में सेट नहीं होते, फनल में स्टेप्स होते हैं. सो इफ़ यू क्लिक ऑन अ बटन, it may take to the next step, but you cannot go back normally unless you click the back button. But so funnel linear होती है. जो वेबसाइट है वो एक दरख्त की तरह होती है, उसकी शाखें होती हैं, आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं. सो फनल में जो अच्छा दूसरा सवाल ये है आपका कि फ़नल में वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं. वो ज़रूरी हैं, आपने टोफू, मोफू और बोफू का कहीं पर नाम सुना होगा. सो टोफू इज़ द टॉप ऑफ द फनल, बोफू इज़ बॉटम, एंड बोफू इज़ द बॉटम. I hope I said it right. So टोफू में नॉर्मली हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या सेल कर रहे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं. बोफू में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि लॉट ऑफ यूज़र्स आर यूजिंग दैट. मे बी उसके FAQs और रिव्यूज़ शो करते हैं. और बोफू में हम कॉल टू एक्शन या कैलेंडर का लिंक या कोई ऐसी चीज़ होती है कि इफ़ यू वांट मोर क्रेडिबिलिटी, या हम उसमें डायरेक्ट ऑर्डर फॉर्म यानी हम उसको कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें हैं हम उसको बॉटम में रखते हैं. वैसे तो ये ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम तीनों में ही कॉल टू एक्शंस डाल देते हैं, तीनों हिस्सों में, ताकि कहीं पे भी वो मिस ना कर सके. बट एसेंशली फर्स्ट वी एक्सप्लेन what we are selling, then we try to sell harder with proof
and at the bottom the last section is just like make sure you click the button and not go anywhere else. So ये एक फनल के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. उन एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है वो डिज़ाइनर की अपनी मर्जी है. विस्पकोड के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. शुक्रिया.